One day I saw a small snake in the compound. It was crawling along slowly, but when it saw me, it moved away quickly and hid itself in a coconut shell. I quietly went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. Then I took the shell and ran to Grandmother. "Look, Grandma," I cried, "I have caught a snake." "Snake?" asked Grandmother in alarm. She was shocked. She cried for help. Grandfather came running. When he learnt that I had a snake in the shell, he snatched the shell and threw it away. एक दिन राजा ने कंपाउंड में एक छोटा सांप देखा। ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, लेकिन जब उसने राजा को देखा, ये जल्द ही दूर चला गया और एक नारियल के छिले में छप गया। राजा चुपचाप करीब गया और छिले के मुंह को एक पत्थर से बंद कर दिया। फिर उसने छिला लिया और दादी की तरफ दौड़ा और राजा ने इसे बताया कि इसने एक सांप पकड़ लिया है। वो खौफजदा हो गई। इसने मदद के लिए चीख मारी और दादा दौड़कर आए। जब उन्होंने सुना कि राजा के पास एक छिले में सांप है, उन्होंने छिला छीन लिया और दूर फेंक दिया। The snake crawled away and disappeared behind some bushes. Grandfather warned me never to go near a snake, because snakes were very dangerous. Later in the evening, I tried to catch a bee, and it stung me on my finger. I felt a sharp pain. I ran to Grandmother and told her that I had been bitten and wanted her to do something to stop the pain. Grandmother thought that I had been bitten by a snake. She called out to Grandfather, "Come and see what has happened to Raja." सांप चला गया और जियारोहे के पीछे छप गया। दादा दादी ने राजा को हमेशा सांपों के करीब न जाने को कहा, क्योंकि सांप बहुत खतरनाक होते हैं। शाम के वक्त में राजा ने एक मक्खी पकड़ने की कोशिश की और उसने इसका अंगूठे पर डंक मारे। अचानक इसने शदीद दर्द महसूस किया। वो दादी के पास दौड़ा और इसे बताया कि इस पर डंक लग गई है और वो चाहता है कि दादी दर्द को रोकने के लिए कुछ करे। दादी ने समझा कि इस पर सांप ने काटा है। दादी ने दादा को बुलाया और बताया कि राजा को सांप ने काटा है। Grandfather came at once. He looked at my finger and there was a blue mark. Without a word he took me in his arms and started running. He ran across the garden and through the paddy fields. He ran and did not stop until he reached a small house quite some distance away from our home. Then he shouted for the man who lived there. An old grey-haired man came out of the house. He knew the cure for snake bite. Grandfather asked him to cure me. The old man took me inside. He looked at my finger and then asked me to sit down and not to move. I sat on Grandfather's lap. The old man then took some water in a small brass vessel, sat in front of us and started reciting some mantras. दादाजी फौरन आए। इसने राजा के अंगूठे पर नजर डाली और वहां एक नीला निशान था। मजीद तफसीलात पूछे बगैर दादाजी राजा को लेकर भागे। इसने बाग और खेती-बाड़ी के जरिए दौड़ा और इस वक्त तक नहीं रुका जब तक कि वो एक छोटी सी जगह पर पहुंच गया जो इसके घर से थोड़ा दूर था। फिर उसने वहां रहने वाले आदमी को बुलाया। एक सुरमई बालों वाला बूढ़ा आदमी घर से बाहर आकर देखा। इसे सांप के डंक का इलाज मालूम था। दादाजी ने इससे राजा का इलाज करने के लिए कहा। बूढ़ा आदमी उसे अंदर ले गया। इसने इसके अंगूठे को देखा और फिर इससे बैठने को कहा और हलचल न करने के लिए कहा। राजा दादाजी की गोदी में बैठा रहा। बूढ़े आदमी ने फिर छोटे पीतल के बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया, उनके सामने बैठा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me. But Grandfather held me tight and did not allow me to talk. Grandmother too had arrived by then and some other people with her. They looked sad and silently watched me. By this time the pain in my finger had stopped.
But still I had to sit there and get cured of snake bite. के पीतल के बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया, उनके सामने बैठा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। राजा चाहता था कि वो इसे बताए कि ये मक्खी थी और न कि सांप ने काटा था, लेकिन दादा ने इसे मजबूत पकड़ लिया और इसे बातचीत करने नहीं दिया। इस दौरान दादी और कुछ दूसरे लोग आ चुके थे। वो उदास लग रहे थे और चुपचाप राजा को देख रहे थे। इस वक्त तक राजा के अंगूठे में दर्द रुक चुका था, मगर फिर भी इसे वहां बैठना पड़ा और सांप के काटने का इलाज होना था। After a few minutes, the old man got up, washed my finger and gave me some water to drink. He asked me to keep quiet for some more time. Then he turned to grandfather and said, "Thank God, you brought Raja in time. He is out of danger now." It was indeed a poisonous snake that bit him. Grandfather, grandmother and all others thanked the old man for the magic cure. On returning home, grandfather sent him gifts. चंद मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा, राजा के अंगूठे को धोया और उसे पानी पिलाया। बूढ़ा आदमी ने राजा से कहा कि वो और चंद देर चुपचाप बैठा रहे। फिर उसने दादाजी से कहा कि वो खुदा का शुक्र करें जिसने राजा को बगैर ताखीर के उनके पास ले आया, और ये भी कि राजा अब खतरे से बाहर है, और दादा को बताया कि यह वाकई एक जहरीला सांप ने राजा को काटा है। दादाजी, दादी और दूसरे लोगों ने इस बूढ़े आदमी का जादुई इलाज का शुक्रिया अदा किया। घर वापसी पर दादाजी ने बूढ़े को कुछ तोहफा भेजा।